some in connectivity. So, can you hear me? I'm just going to start the recording, please. All right. Okay. In the previous class, we talked about the structure of mitochondria and its function as well, isn't it? We discussed about the mitochondria. And now today we will discuss about the second organelle, which is the chloroplast, and then we will discuss about the endoplasmic reticulum, and then about the Golgi body. ये तीन organelles आज मैं कोशिश करूंगा कि इस lectures में आपको समझा दूं. So once again, I'm just going to teach it on the light board. मैं अभी light board वाली जो वीडियो है वो आपके साथ दोबारा वहीं से connect कर रहा हूँ. प्लीज आप फोकस कीजिएगा और इन द वीडियो में कोई भी चीज समझ में ना आए तो जस्ट रेज योर हैंड एंड आस्क मी देन आई विल स्टॉप द वीडियो एंड आई विल डिस्कस विद यू बिकॉज़ आई एम आल्सो कनेक्टिंग विद यू पीपल इन द सेम टाइम राइट एंड चेक द वॉइस क्वालिटी एज वेल एंड द क्वालिटी ऑफ द video as well. If there's some consequences and some problems, then you can ask me. Thank you. Just give me a few seconds that I have to start the video with you, please. Yeah, so let me to share it now. Just tell me, can you see my screen? नजर आ रहा है मेरा screen बेटा? Yes, sir. That's great. So मैं वीडियो रन कर रहा हूँ, क्लोरोप्लास्ट शुरू हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया कल हमने पढ़ लिया था, और अगर कोई लैगिंग वगैरह साउंड में हो रही है तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज. Chloroplast. Now let's talk about the chloroplast. Chloroplast की सबसे पहली बात यह है कि chloroplast is present only in plant cell. It does not exist in animal cell. एक बात सबसे important. Now chloroplast is like a disc-shaped structure. Mitochondria क्या था? Rod-shaped structure था. Chloroplast is a disc-shaped structure. It's like a disc-shaped structure. And it is also made up of two membranes like the mitochondria, but it's somewhat like bigger in size and somewhat like not so much rod shape. It's like oblong shaped structures or disc shape. It's like and it has two membranes, the outer membrane and the inner membrane, but comparatively both the membranes are smooth. Now there is an additionally third membrane system. It's called membrane system, extensively folded membrane inside, and these folds like just like a stack of coins inside. You can see like this one. Like these are also membrane system, are separate membrane system, but it's too much extensively folded. And this fold, a complete fold, I mean one stack of fold is called granum. Granum. You can see like इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा जैसे कि एक सिक्के हैं, coins हैं, coins को आपने एक दूसरे के ऊपर रखा है, एक stack बना है, लेकिन आप ये समझे कि वो जो सिक्के हैं वो अंदर से हॉलो है और फिर हॉलो होने के बाद उनके जो ल्यूमिन है उसको आपने कंटिन्यू किया, यानी बीच में से जैसे सिक्के एक दूसरे के ऊपर पड़े हैं ना. मैं एक मिसाल दे देता हूँ. ऐसे एक सिक्का, दूसरा सिक्का, तीसरा सिक्का, चौथा सिक्का, पांचवा कॉइन, छठा. अब ये कॉइन्स है. अगर मैं इंटरनली इसको हॉलो करूं और इसको थोड़ा हल्का हल्का ब्रेक कर दूं बीच में से,
यानी इनके अंदर एक ल्यूमेन बना दूं ऐसे, तो ये कुछ यू शेप बनेगा जैसे ये नजर आ रहा है। और इसका मतलब है कि इनका जो ल्यूमेन है वो कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस ल्यूमेन होगा, एक ही ल्यूमेन होगा सबका, जो चीज़ यहाँ है वो यहाँ है। अब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो स्टैक ऑफ कॉइन के फॉर्म में है, इसको हम कहते हैं ग्रेनम। क्या कहते हैं? ग्रेनम। ठीक है, तो इट्स लाइक अ स्टैक ऑफ कॉइन एज आई टोल्ड यू। नाउ अगर आप इस ग्रेनम को देखें तो ये एक नहीं होता, ये बहुत सारे होते हैं। इसी तरह दूसरा ग्रेनम मैं यहाँ बना देता हूँ, वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन अभी फिलहाल हम 2-3 बना देते हैं। अच्छा, अब इसी तरह एक और बना लेते हैं यहाँ पे। So you can see here like 3 different grana, इसका प्लूरल होता है ग्रेना। ग्रेनम एक को कहते हैं, ग्रेना प्लूरल, सारे मिला के क्या है? ग्रेना। तो GRANA आ जाएगा ग्रेनम की जगह पे। फिर ये जो ग्रेनम है ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। किस तरह कनेक्टेड होते हैं मैं बता देता हूँ किस तरह कनेक्टेड होंगे। I mean कुछ इस तरह, यानी इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं कनेक्टेड है, यानी the molecules or the substances which are present in this granum can easily transport it to the other one. Similarly, they can also be connected with one another, like they have 2 area, one is oppressed side, one is non-oppressed. The granum one is the oppressed side, and the middle one, which is used as a transporting membrane, that is the non-oppressed side. So the oppressed side is called grana, and the non-oppressed side, which is like this one, this is called lamella. Lamella. So you can see here 2 lamella, one there and one is here, as they are used to connect these granum with one another. And the plural is lamellae, just because one E at the end. So lamellae is the plural. So up till now I told you that there are 2 membrane outer which are both smooth, but that's the importance of the membrane is like the 3rd membrane system. Why we say the membrane system? Because it's not a single, it's like only one membrane. It's, of course it's a membrane, but it's so much folded extensively to make 3 different systems here. So a lot of systems, but this time I can show only 3, and they are called grana, and each one is called granum. Now the other area of the compartment, where just I make a dot here, like that area, the space where the granum are located, that part is actually the large space where most of the liquids and some chemicals and enzymes are present. That's the big compartment, and this place is called stroma. Called stroma. So now the 2 important compartment in chloroplast, one is called grana and one is called stroma. आप लोगों ने photosynthesis के अंदर पढ़ा था जब आप O level में थे कि there are 2 sets of reaction in photosynthesis. One is called light reaction and one is called dark reaction. तो याद रखिएगा जो लाइट रिएक्शन होता है उसके लिए ज़रूरत होती है लाइट की भी और क्लोरोफिल की भी। अच्छा, अब अगर इस डायग्राम को देखें तो इसमें जो ग्रेनम है क्लोरोफिल सिर्फ यहाँ होती है और कहीं नहीं होती। सो क्लोरोफिल इज प्रेजेंट ओनली इन द ग्रेना, इसलिए जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होगा या जो लाइट रिएक्शन होगा वो ग्रेनम के अंदर होगा, और जो डार्क रिएक्शन होगा उसके लिए लाइट की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्ट्रोमा के अंदर होगा। सो लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द ग्रेना एंड डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा। राइट, नाउ whenever if somebody asks you कि कौन से प्रोसेस में ज्यादा एंजाइम की जरूरत पड़ती है, लाइट में या डार्क में, so we normally say that dark reaction is enzymatic reaction. So lot of enzymes are present in the stroma because in the stroma dark reaction takes place. Right, now as concerned to the chloroplast, now some important thing which I have to mention as well. Just like the mitochondria, chloroplasts also contain a circular DNA. So it also possesses a circular DNA here.
So a circular DNA, and beside the circular DNA, it also contains 70S ribosomes, like the blue one dots, and sorry, the green one, it shows. So it is the circular DNA. Once again, circular DNA, and again here is the 70S ribosome. 70S ribosome. I'm so sorry, it's a little space, so it's very difficult to manage, but I'm trying, unfortunately. So 70S ribosome, lamella, and circular DNA. Lamella is like this one, this structure which connect the grana in between them. So overall, the structure of chloroplast, disc-shaped structure, two membrane. Although there are three membranes, but we normally consider as two membranes because the outer membranes are just fused with one another and smooth one. So the outer membrane are again smooth, but the inner one is a membrane complex system with many folds, and each fold is just like a stack of coins to make granum. There's a lot of grana inside the big compartment, which is called the stroma. So there are many grana, and the grana are connected with one another with the help of lamellae, through which transportation takes place. Beside this one thing more, each fold of the granum, don't forget, I told you, each fold of the mitochondria is called crista. मैंने पहले क्या बताया था कि जिस तरह यहाँ इनर मेम्ब्रेन का एक फोल्ड है, इस एक फोल्ड को क्रिस्टा कहते हैं, जिसके अंदर एंजाइम लगा होता है एटीपी सिंथेज, और वो एटीपी बनाते हैं। यहाँ पर भी एक बात हम एक फोल्ड के लिए अलग इस्तेमाल करेंगे। सो ईच फोल्ड, यानी अगर मैं इस एक फोल्ड की बात करूँ, ये वाली एक फोल्ड ऑफ द ग्रेना, दिस इज कॉल्ड thylakoid. Thylakoid membrane. Thylakoid membrane. So indirect we can say कि जो सबसे छोटा यूनिट है वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, क्योंकि वो एक ग्रेना का एक कॉइन है, एक कॉइन, सिंगल मेम्ब्रेन। फिर बहुत सारे थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन मिलके एक ग्रेनम बना रहा है, स्टैक ऑफ कॉइन्स, राइट? तो थाइलाकॉइड इज द स्मॉलर यूनिट, granum is the bigger one which consists of many thylakoid membrane, and then granum के बाद बड़ा यूनिट आएगा grana, because there are many granum which are connected with the help of lamellae. So lamella are connecting these grana, and once again they have the circular DNA as well as the 70S राइबोसोम। तो इसके लिए भी वही स्टोरी अप्लाई होगी जो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए था, और कहा जाता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है, ये दोनों शुरू में क्या थे, बैक्टीरिया थे, जो कि एक यूकैरियोटिक सेल ने इनगल्फ किया, और इनगल्फ करने के बाद वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर सका। जो कहानी मैंने पहले बताई थी माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, वही कहानी क्लोरोप्लास्ट के लिए भी है। फ़र्क यह है कि शायद क्लोरोप्लास्ट वो बैक्टीरिया था जो उस वक्त फोटोसिंथेसिस कर रहा था, आज भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, तो इसको किसी यूकैरियोटिक सेल ने इनगल्फ किया था और डाइजेस्ट नहीं कर सका, और फिर सिम्बियोटिक सिचुएशन दोनों के दरमियान हुई। बहरहाल इन दोनों की कंपैरेटिवली एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि क्लोरोप्लास्ट की जहाँ तक बात है, इसका जो डायामीटर है वो माइटोकॉन्ड्रिया से ज़्यादा है। क्लोरोप्लास्ट के मुतालिक कहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का जो डायामीटर है वो अबाउट 3 माइक्रोमीटर से शुरू होता है और तकरीबन 5 माइक्रोमीटर तक जा सकता है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनका डायमीटर तकरीबन 3 के रेंज में होता है। सो इट्स लाइक 3 टाइम्स बिगर देन दी माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं तो हम यूजुअली क्लोरोप्लास्ट को भी बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो ये वो कुछ डिस्कशंस थी जो मैं बहुत ज़रूरी समझता था। आपके एज लेवल के अंदर इस पर बहुत सारे MCQs हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया जिस तरह ATP बना रहा था, क्रिस्टा के अंदर एंजाइम था ATP सिंथेज, तो बेटा ये ATP सिंथेज एंजाइम हमारे पास यहाँ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर भी मौजूद है। और इसका अगर अंदर मौजूद है, इसका मतलब है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर भी ATPs बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। तो 2 ऑर्गेनेल्स हमारे प्लांट सेल के अंदर 2 ऑर्गेनेल हैं जो कि ATPs बनाते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि ये दोनों प्लांट के अंदर होंगे। लेकिन जहाँ तक एनिमल सेल्स की बात करोगे तो वहाँ सिर्फ एक ऑर्गेनेल है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, और वो है
माइटोकॉन्ड्रिया। अगरचे एटीपी साइटोप्लाज्म के अंदर भी बनती हैं, लेकिन ज़्यादा एटीपीज बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर आप एनिमल सेल की बात करें। और अगर प्लांट सेल की बात करें तो फिर वहाँ पर साइटोप्लाज्म में भी बनते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी बनते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी बनते हैं। सो दिस इज अ बिग डिस्कशन about the cell organelles which include the mitochondria and chloroplast. So this is the concept. Important चीज़ें जो याद रखनी है एक बार फिर on the basis of MCQs. Both are double membrane structure. Both have extensively folded inner membrane. The inner membrane is called crista. The inner membrane is called granum. Right? So here also we have circular DNA and 70S ribosome. Here we also have circular DNA and 70S ribosome. The diameter is 1 micrometer generally, but the diameter is generally 3 micrometer, although it has a range from 1 to 3 micrometer. It's a 3 to 5 micrometer, right? And of course, it's a disc-shaped structure. It's a rod-shaped structure. And yes, these are the comparison between these two types of cell. So I'm just going to talk to you about the next organelle, which is endoplasmic reticulum and Golgi body. Let's talk about these two organelles. Thank you. Sir. जी बेटा, yes, yes. You want to ask me something? सर ये सर्कुलर डीएनए जो होता है वो एक ही होता है खाली? नहीं, सर्कुलर में नहीं होंगे, कई डीएनए होंगे। एक सिर्फ मैंने इसलिए बनाया क्योंकि जगह नहीं थी। So there's many circular DNA बेटा। अच्छा, और सर वो लेमिला जो है, दो ग्रेनम के बीच में सिर्फ एक लेमिला होगा या 2-3 होंगे? नहीं, कई हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक भी हो सकते हैं, 2-3 भी हो सकते हैं, मल्टीपल। लेकिन ये कि वो जो दो ग्रेना को मिलाने वाला स्ट्रक्चर है वो बेसिकली लेमिना कहलाएगा। वो एक हो या दो, लेकिन उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लेमिना। और सर एक और सवाल, क्या आप स्ट्रोमा को वो कर सकते हैं रिपीट वापस? स्ट्रोमा जो मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ इसका। ये देखिए, ये जो डॉट वाला पार्ट है पूरा, ये स्ट्रोमा है। मतलब दो कंपार्टमेंट बन गए ना। अगर आप इन दोनों मेम्ब्रेन की बाद आते हो अंदर, तो दो कंपार्टमेंट है। एक कंपार्टमेंट ये ग्रेनम के अंदर वाला पार्ट है पूरा, और एक कंपार्टमेंट बाहर वाला है। तो यहाँ बहुत सारा लिक्विड होता है, और इस लिक्विड के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जहाँ डार्क रिएक्शन होता है। और ये जो है ये ग्रेना है पूरा। तो चीजें अगर ग्रेनम के अंदर जाएंगे तो स्ट्रोमा से पास होकर ग्रेनम में जाएंगे, या ग्रेनम से बाहर आके स्ट्रोमा में जाएंगे। इट्स लाइक द इनर स्ट्रक्चर। सो दो बड़े कंपार्टमेंट, एक बड़ा कंपार्टमेंट जो कि पूरे लिक्विड से भरा है, दैट्स कॉल्ड द स्ट्रोमा, और दी जो एक है थैलाकॉइड स्पेस, ये जो अंदर वाला लिक्विड है, लिपली मैंने गॉट इट सर। यस, मुझे ये पूछना था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी 70S राइबोसोम भी है और सर्कुलर डीएनए भी है, तो क्या ये बैक्टीरियन नहीं होगा? बिल्कुल। इसके मुतालिक भी मैंने कहा तो सही अभी आपको लास्ट में कि साइंटिस्ट इसके मुतालिक भी कहते हैं कि